Namaskar everyone. My dear students, I welcome you to this next lecture of concept through questions. Wonderful, my dear students. So hope you are enjoying the course, and in today's lecture, we are going to look at one of the fantastic questions that I have brought for you guys. My dear students, the question is on the board. Let me read out the question. वही हमारा पुराना तरीका, पहले आराम से क्वेश्चन रीड करेंगे, समझेंगे, उसके फिर पीछे का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, एंड देन वी आर गोइंग टू फोकस एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर प्रॉब्लम. चलिए, लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू एंड मार्क ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आर देयर इन द क्वेश्चन. एक्सेलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया. जस्ट चलो, लेट अस स्टार्ट. Find the magnitude of the force acting on the plate AB. So there is this plate AB is there. Diagram is given in the question, my dear students. Have patience. दिखाएंगे diagram. पहले question पढ़ लेते हैं. So find the magnitude of force AB over the plate AB and its point of application. Okay. There is water in the tank up to a depth of itna meter, and below that it is filled with mercury. He says in the problem clearly that take the width of the gate AB to be as 3 meter. Excellent, students. Now, he has given this diagram in the question itself. What a mind-boggling question it is. So there we are actually seeing that there is a tank is there, and in that tank there is this plate which is AB shown by the yellow color. Can you see that, my dear students? So there is this plate AB which is at an angle of 30 degree. But the important and the unique thing about the question is that this plate is actually submerged in it is not actually submerged. On one side of the plate there are two types of fluids are there. That is, it is water and mercury is there. Excellent. All the heights and everything is given. Angle of inclination of the plate is given, and this is our plate AB. Now what we are concerned about, देखिए, why I have chosen this question specifically is because most of the students, they are going to learn that what is the hydrostatic force acting on a surface due to a single fluid. But in this question, there are multiple fluids. So yes, definitely there is something unique about the question, and we need to learn. We need to learn how to find. Don't worry. Okay, wait, my dear students. So over this yellow plate AB, two things I need to find out. First thing is the total magnitude of the hydrostatic force that is acting over the plate AB. Yes, I have to find out that. And second thing I have to find out is the point of application of that resultant force over the surface AB. Excellent, बच्चों. आप लोग जानते हो ये पानी और मरकरी, water and mercury. Of course, mercury is denser than water, so more the density, heavier is the fluid. भाई density का significance ही यही होता है ना बच्चे. Heavier is the fluid. So mercury is going to settle down in the tank and water is going to rise up. And on the side of this plate, you need to find out that how much force these two are applying over the plate AB. Excellent. Hope you like the question. But now, see, already in classroom, we people know that. देखिए बेटा, इस कोर्स का मकसद अलग है, ठीक है? Here we are not basically interested in the things that we do generally in classroom. But we are interested in the things which are unique in nature. Okay, this is one of the questions like this. Now, just concentrate. In our classroom, we generally study that how to find out the hydrostatic force. We use the formula rho g ax bar. That is the net resultant hydrostatic force over the surface. अभी hydrostatic force क्या होता है, उसका point of application क्या होता है, ये सब डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये क्लासरूम में आपको ब्यूटीफुली पढ़ा दिया गया है. अभी फिर भी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी टेक दिस प्लेट इज देयर, देन अवर नॉर्मली इफ ऑन दिस साइड ऑफ द प्लेट, अगर इधर पूरा पानी भर रखा है, मान लीजिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मान लीजिए यहां पर पूरा पानी भर रखा है, देयर इज दिस वाटर दैट इज फिल्ड ओवर हेयर,
and there is no water on this side, there is nothing on this side is empty. आपको पता है अगर यहां पर भी पानी ले लेंगे और यहां पर भी पानी ले लेंगे, द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लेट आर गोइंग टू गेट कैंसल्ड आउट. फिर भाई हमारे पढ़ने का मकसद फेल होगा ना, समझ रहे हो बात को. सो इसीलिए वाटर इज देयर ओनली ऑन वन साइड ऑफ द प्लेट. नाउ ऑलरेडी यू गाइज माइट बी नोइंग, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं ये एक एडवांस लेवल का कोर्स है, तो आपको बेसिक्स चीजें पता होनी चाहिए. मैं तो आपको सिर्फ रिवाइज करवाने की वजह से ये थोड़ी कुछ चीजें बता रहा हूं, उसके बाद हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं. चलिए आइए देखते हैं इधर. सो एवरीबडी नोज फ्रॉम डेरिवेशन दैट द टोटल हाइड्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ओवर दिस प्लेट is equal to WA x bar, or in simple words you can write rho g a x bar. Excellent students of India. Or in other words you can say like this, that this is rho g x bar multiplied by area. Now how many of you guys know that this rho g x bar is nothing, this is the pressure at the center of gravity of the plate. Pressure at the center of gravity of the plate. आप ये देखिए ना. So for this plate, symmetric plate only, having a length L, let us say, then you know my dear students, the center of gravity is going to lie somewhere here, and the total resultant hydrostatic force acting over the plate will be equal to the pressure at the center of gravity. Pressure at the center of gravity. Then how much is going to be the pressure at the center of gravity of the plate? My dear students, the distance of vertical distance of center of gravity from the plate is going to be, see this vertical distance is x bar, and pressure depends on the vertical height. Pressure always depends on the vertical height, my dear students. So the pressure at the center of gravity of the plate is written as rho g x bar. Excellent, my dear students. Now see, so can you write this rho g x bar as the, I'm writing here as the pressure at center of gravity g multiplied by the area of the plate is the force. So you guys know from class, अरे बच्चा ये सब आपको पढ़ाया जा चुका है क्लासरूम में, डिटेल में पढ़ाई जा चुकी हैं सारी चीजें. अभी तो सिर्फ आप ये समझो कि सर एक तरह का रिवीजन करवा रहे हैं आपको. So total hydrostatic force acting over the plate is pressure at center of gravity multiplied by the area, or you can say pressure at the centroid of the plate multiplied by the area. Excellent students of India. And we also derive in the classroom that, my dear students, the point of application of hydrostatic force is known as center of pressure. And you know the vertical distance of center of pressure from the free surface from our classroom derivation, we guys know that it is x bar plus Ig divided by ax bar into sine square theta. Yes or no? Yes, wonderful, wonderful, wonderful. So therefore, my dear students, this is some point center of pressure, and already told to you in the classroom that the center of pressure can never lie above center of gravity. Either it is going to lie below center of gravity in case of vertical and inclined surface, but in case of horizontal plane surface, it is going to coincide with the center of gravity, but can never lie above the center of gravity. Okay, nice. So you see, if this is the center of pressure is there, then my dear students, from this point, of course, normal to the surface, concentrate, normal to the surface, the total hydrostatic force is going to pass, and you know this point, which is the point of application of this hydrostatic force, is known as center of pressure. And the vertical distance of center of pressure from the free surface is given as h, and that h, my dear students, is x bar plus Ig divided by ax bar into sine square theta. बच्चों ये दोनों का दोनों डेरिवेशंस आपको क्लासरूम में कराया जाता है, ब्यूटीफुली कराया जाता है, और ये अभी जो भी मैंने 5 मिनट आपको चीजें बताई,
ये सिर्फ रिवीजन के तौर पे मैंने आपको बताई, बट अब हम लोग मूव करेंगे हमारी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ, which actually I want to teach you. That is pressure prism, my dear students. So, see, this is one of the methods. This is one of the methods to find out the force and the point of application of force. But now let us focus on another method that can also be used to find out the force and the point of application of force. And my dear students, that another method is pressure prism. That another method is known as pressure prism. Now, first of all, a student must understand, sir, what is a pressure prism? Excellent, my dear students. Don't worry. So, already you guys can see that it is variation of, oh yes, wonderful. Now, again, I am having a plate, okay? Now we are not studying Wx bar or rho g Ax bar. We are done with it. Let us go for pressure prism. Pressure prism समझने से पहले या उसके माध्यम से फोर्स की वैल्यू निकालने से पहले बच्चे आपको ये पता होना चाहिए कि दोस्त प्रेशर प्रिज्म होता क्या है. What do we mean by pressure prism? So for example, if this is some rectangular plane surface is there having a length of L, and let the width, I'm writing here, let the width of the plate is some B. Width of the plate is some B. Now, my dear students, over this plate, you guys know that over here there is water on this side. Over here there is water on this side. There is water on this side. Excellent students of India. And this water is going to apply pressure force. Of course, this surface is there and water is there. So water is going to apply pressure force over this area or over the plate. Over the plate. But my question to you is that whether the pressure which is acting over the plate is going to be constant or varying. It is going to be varying, my dear students. Why? Because already you know that pressure varies with vertical depth. And you can see clearly from here that if this is the plate is there, A end of the plate is at a vertical distance of x1 from the free surface, and B end of the plate is at a distance of x2 from the free surface of the plate. So my dear students, at A end the pressure is going to be less, whereas at B end the pressure is going to be more. And hence over the surface of the plate there is a pressure variation. And hydrostat, अब देखो इस प्लेट के ऊपर इतना तो मान रहे हो कि प्रेशर लगेगा, और वो प्रेशर कांस्टेंट ना हो के प्रेशर क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है. दोस्तों वो वेरिएबल प्रेशर फोर्सेस जो हैं, they are going to apply force over the plate. That will be the pressure force. And of course that force is due to pressure, and pressure force always acts normal to the surface. Normal to the surface. So the pressure is going to apply force over this plate, which is going to be normal to the surface. But if the pressure is varying, then the force is also varying. So there is going to be variable forces over this. Then I have told you in classroom, we have studied beautifully that these variable forces, if you remove these variable forces and apply a resultant force, that resultant force is itself known as hydrostatic force, whose magnitude just now we studied is WAx bar, and point of application is center of pressure, whose vertical distance from free surface is x bar plus Ig divided by Ax bar into sine square theta. My dear students, just concentrate. So, how many students can realize that there is actually variation of pressure happening over this plate? And please try and understand in three-dimensional. Okay, I will make you understand, don't you worry. For example, if this is the plate is there, this is the plate is there, can you see this? This is the plate. Oh my God, it's a transparent thing. But don't worry, don't worry. It's a plate is there. The length of the plate is L and the width of the plate is B, my dear students. Then the pressure acting over here is going to be rho g x1.
whereas the pressure acting over here is going to be rho g x2, which is more than that. Because as we move down on the plate, the vertical depth in the fluid will also keep on increasing. So the pressure will keep on changing. Pressure will keep on changing. But please try and understand that this pressure, in front view, you are going to get a trapezium. But also understand that it is spread over the depth. So first of all, let me show in 2D figure that how the pressure is going to vary. Don't worry. So concentrate here. Can you see that there is going to be some pressure here? Yes, there will be. But the pressure at B point is going to be much more than that. Yes, wonderful. Then there is going to be variation of pressure over the surface of this plate. And you know, let us join this by a straight line. Why I am joining with straight line? Because the variation of pressure is linear with depth. Variation of pressure is linear with depth. Oh my God. So my dear students, what you're seeing here is that this is known as the pressure prism. This is known as a pressure prism. अभी आप वाले व्यू में, कैमरे वाले व्यू में आपको ये 2D में ट्रेपीजियम नजर आ रहा है, ट्रेपीजियम नजर आ रहा है. लेकिन जरा इसे इमेजिन, ये देखो, it is something like this. For example, if this is your plate is there, then this is your pressure variation over the plate. Yes or no? Yes, my dear students. But just try to imagine that this pressure variation is spread over the complete depth over the plate. Is spread over the complete depth over the plate. अरे प्यारे बच्चों, भाई ये जो प्रेशर वेरिएशन आपको इधर नजर आ रहा है, ये पूरी गहराई, डेप्थ बी दे रखा है ना, ये देखो, पूरी गहराई में भी फैला हुआ है. तो अभी मुझे ये बताओ, कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि दोस्त ये एक 3D शेप बनेगा ओवर द डेप्थ ऑल्सो, ओवर द डेप्थ ऑल्सो. So you just see this. You just see this. I have already made a 3D. Excellent. अभी मेरे ख्याल से किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. There should be no doubt, my dear students. So this is the plate is there. Length is L, width is B, and you can see in the front view. Let me take the highlighter so that you are able to understand. See, in the front view, you were only able to see this trapezium. समझ आ रहा है तेरे को? समझो समझो समझो. ये जो फ्रंट व्यू में आपको सिर्फ ये नजर आ रहा था. क्लियर? वंडरफुल. लेकिन this is spread over the complete depth. This is spread over the complete depth, which is B, and hence it is a complete prismatic shape. It is a complete prismatic shape. And you know, this pressure variation diagrammatic representation over the plate, this, my dear students, is known as pressure prism. So this is representation of pressure prism in 3D. This is representation of pressure prism in 3D. Are we clear till here? Okay, don't worry. So this is, you just see, this is in two-dimensional, and this, my dear students, is the representation in 3 dimensions. Now some of the students might ask me that, sir, everything okay, we have got the visualization that how this prism is there over the surface of the plate is there. But sir, how the volume of the prism will give the net hydrostatic force? Okay. Now, let me tell you this. My dear students, what you do is, out of this complete 3D prism, you take with a blue color, I'm showing with a blue color highlighter, you take a small section from this prism. For example के तौर पे मान लो यार, ये केक का स्लाइस है, ठीक है, केक का स्लाइस है, पेस्ट्री, you see, पेस्ट्री का स्लाइस है. तो पेस्ट्री के स्लाइस में से एक हल्का सा हिस्सा हम लोगों ने बाहर निकाला अपने एनालिसिस के लिए. सो
बेटा इस पेस्ट्री का जो स्लाइस का ये जो छोटा सा स्लाइस आप लोगों ने निकाला, इसका हाइट किसके बराबर होगा? इसका हाइट होगा बच्चे P के बराबर, एंड यू हैव टेकन अ स्मॉल एरिया, सो इट इज P इंटू डी ए, P इंटू डी ए. वंडरफुल. सो small force acting over the plate is going to be P into dA. And what is this P into dA? This is nothing, this is the small volume. This is elementary volume. So I'm writing here, this is nothing, this is the elementary volume. Elementary volume. Wonderful. Excellent, my dear students. अगर मुझे छोटा फोर्स ना चाह के टोटल फोर्स चाहिए, then I should do what? Integration. So let us integrate the small force dF. That will be integration of PdA. And आप देखो, when you integrate this small, देखो इसका height P है और इसका जो स्ट्रिप जो हम लोगों ने लिया एक छोटा सा, उसका एरिया dA था. अभी उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म आ जाएगा? यस और नो? यस. बच्चों देखो, समझोगे तो ही चीजें आसान होंगी ना. और धैर्य रखो, सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी. आप क्यों? धैर्य स्टूडेंट का गहना है, सदैव पहन के निकलना है. सो देयरफॉर द टोटल फोर्स विल बी इक्वल टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म. Volume of pressure prism. So I have proved here that yes, we can also find the total force acting over the plate or the surface, and that will be equal to the volume of the pressure prism, my dear students. Excellent, excellent. Nice. Wonderful. Now let us move to our main slide. Don't worry about, have patience. To learn things, have patience, concentrate. Now, let us read it out. The pressure prism is a graphical representation of variation of pressure over a surface or over a plate. Excellent, it is correct. Next he says, the hydrostatic force as well as the point of application of the force, wonderful, can be founded out with the help of pressure prism. सही है, अभी समझाए. देखिए, तो अपने पास दो तरीके हो गए हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए. पहला तरीका, किसी प्लेन सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाला जा, सुन लो यार तुम मेरी बात. किसी भी प्लेन सरफेस पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स कैसे निकाला जाता है? पहला तरीका जी, व्हाट शुड वी डू इज फाइंड द प्रेशर एट द सेंट्रॉइड ऑफ द सरफेस, मल्टीप्लाई इट विद एरिया. Or in simple words, WA(x bar) is the force. And the other method to find out the force over a plane surface is whatever the pressure prism is going to be there na, over the surface, find the volume of that pressure prism. Find the volume of that pressure prism, my dear students. Wonderful. Yeah, just look at this beautiful point. Net force on the plate is equal to the volume of the pressure prism. क्या इसी का प्रूव अभी थोड़ी देर पहले सर ने किया? यस, बिल्कुल किए हम. नेक्स्ट, अगेन, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू द CG ऑफ द प्रिज्म. ओहो, अगेन आई एम सेइंग, द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज द CG ऑफ द प्रिज्म. Can you guys please tell me what is the point of application of force called as center of pressure? And this fellow here is saying that the center of pressure of the force is the CG of the prism. Say it again with me. कोई देखिए, बड़ी बार हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत बड़े हो गए हैं और हमें बहुत कुछ आ रहा है और अरे ये छोटी सी बात कौन रिपीट करे या कुछ करे. बट बेटा, मास्टर अपने एक्सपीरियंस से तुम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई जितनी बार मुंह से चीजों को बोलोगे ना, उतना ज्यादा देर तक ब्रेन के अंदर वो चीज रिटेन रहेंगी. और ये फैक्ट है और ये प्रूवन फैक्ट है. सो बड़े सारे टाइम स्टूडेंट्स को, जवान इंजीनियर्स को, है ना, 20, 21, 22 साल की एज ही ऐसी होती है. हम लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये छोटी टुच्चू सी बात कौन रिपीट करे बार बार, कौन क्या करे.
लेकिन इट्स अ वेल प्रूवन फैक्ट कि जितनी बार आप चीजों को रेपिटेशन करोगे, अपने माइंड में बोलोगे या मौखिक तौर पे चीजों को बोलोगे, चीजें उतनी ज्यादा आपके ब्रेन में सॉलिड होती चली जाएंगी, लिटरली सॉलिड होती चली जाएंगी माय डियर स्टूडेंट्स। कर कर देखो। बट फिलहाल द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, यस, सो से इट विद मी, the center of pressure of the force is the CG of the prism. Come on, say it with me. CP of the force is CG of the prism. CP of the force is CG of the prism. अब थोड़ा शांति से देखते हैं। फोर्स का सेंटर ऑफ प्रेशर, दैट इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। अगर आपको देखिए, एक मेथड तो क्या है, H की वैल्यू निकालिए आप, दैट इज x बार प्लस IG डिवाइडेड बाय x बार इंटू साइन स्क्वायर थीटा. That is also giving you the point of application of the force. But how to find out the point of application of force with the help of prism? Here the crux point is that the point of application of force will lie at the CG of the prism. Will lie at the CG of the prism. Excellent students of India. Chalo, let us solve this. Can you solve this? Find the force with the help of pressure prism. Your answer should be yes. Your answer should be yes. Just concentrate here, my dear students. Now, to find the force over this thing, you guys know that first of all you need to make the pressure prism, and you need to find out the what shape of the pressure prism. That is also, it is not necessary that it is having a trapezium shape. It is having a trapezium shape in this case, but in some other cases which we are going to see right now, they will have a different, maybe a triangular pressure prism might be there. Okay, so this is one side of the pressure prism. Let this be some, अरे pressure का prism है ना भाई, अगर pressure का prism है तो side of the prism will be made by pressure. So let this pressure be some P1, and let this pressure, my dear students, is some P2. Now my question to you is, can you find the value of P1? Yes. Pressure is rho G H. Simply rho G H. But important thing is vertical height from the free surface. So at A point, the pressure is P1, and P1 pressure is going to be rho G, vertical height of A point from the free surface. So what is the vertical height of A point from the free surface? Is rho G x1. Wonderful, my dear students. Can you find the value of P2? Yes, that is rho G x2. You just see here, na? So the pressure at this point here is going to be P2, and this P2 point is going to be rho GH, which is again the vertical distance from the free surface is going to be P2. Guys, are you getting or not? Okay, wonderful, wonderful. I hope you guys are enjoying this CTQ course. Okay, wonderful. Next, how to find out the force? Simple. Force is going to be equal to the volume of the pressure prism. Now, volume of the pressure prism. Volume of the pressure prism is going to be area of this triangle. Let me show with the highlighter, don't worry. Is going to be area of this trapezium multiplied by depth. Samajhna re baba. Area of this trapezium multiplied by depth. Area of this trapezium multiplied by depth. Clear? Yes. Let me tell you few more things here. Have patience and listen attentively. Before finding out anything, my dear students, trapezium is going to be an important case here. Because you will see that in most of the cases, the prism that is formed now is having a trapezoidal shape or a triangular shape. Okay, we will see for that. So, for example, if this is the parallel sides of the trapezium is there, A side, and this is B side. I'm making a rough diagram now. And this height of the trapezium is, let us say, H is there. Then how many of you guys know, Are Baba, you guys are engineers. And at least you should be knowing what is the area of the trapezium. Area of the trapezium is going to be half into sum of parallel sides. So sum of parallel side is A plus B into height is H.
This is the area of the trapezium. Area of the trapezium. Now the next important thing that an engineer should know here is where will the CG of the trapezium will lie. Come on, you guys tell me, why do we need to find the CG of this trapezium? अरे CG पता होगा तभी तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स निकालेंगे, क्योंकि अभी अभी सर ने आपको पढ़ाया कि भाई फोर्स का CP, that is force का point of application, is the CG of the prism. And if your prism is having a trapezium shape, then you should know that how to find out the CG of the prism. Now, my dear students, for example, if CG of the prism is lying somewhere here, then you know you can find the distance of center of gravity of the prism from both the parallel sides. From both the parallel sides. Wonderful. मैं आपको फॉर्मूला याद करने का तरीका भी बताऊंगा, बस आप बोर्ड की तरफ ध्यान दो। ये देखो, अगर आप बी वाले पैरेलल साइड से डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, देन द रूल सेज, द फार्मूला सेज, अगर आप बी से निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले के साइड का ट्वाइस लेते हैं। याद करने का तरीका, दूसरे वाले साइड का ट्वाइस लेते हैं तो अपना फॉर्मूला हो जाएगा 2a प्लस बी divided by a plus b into h by 3. Into h by 3. Wonderful. The same distance of CG can be founded out from A side, A parallel side. And the distance in this, देखिए, अब आप A से distance निकाल रहे हो तो फॉर्मूले में 2 गुना किसका लेंगे? दूसरी वाली साइड का। आया कि नहीं? अपोजिट वाली साइड का लेंगे। A से अगर आप दूरी निकाल रहे हो तो दूसरी वाली साइड का ट्वाइस लेंगे, दैट इज 2b प्लस a डिवाइडेड बाय a प्लस b इंटू h बाय 3, इंटू h बाय 3। तो साथियों, याद करने का तरीका भी बता दिया सर ने फॉर्मूले को। एक ट्रेपीजियम में जो उसकी दोनों पैरेलल साइड होती हैं, उन दोनों पैरेलल साइड से आप उसके CG का डिस्टेंस निकाल सकते हो। बस आपको ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूले जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो जिस भी पैरेलल साइड से आप डिस्टेंस निकाल रहे होगे, आपको फॉर्मूले में दूसरी वाली साइड का क्या लेना है? ट्वाइस लेना है, ट्वाइस लेना है। वंडरफुल, एक्सलेंट। नाउ ऑल द थिंग्स लुक सॉर्टेड आउट। लेट अस गो एंड फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ द प्रेशर प्रिज्म। Now, my dear students, the volume of this pressure prism is going to be half into sum of parallel sides. Can you see the parallel sides of this pressure trapezium is going to be made up of pressure, that is P1 and P2. So this is half, sum of parallel sides is P1 plus P2 into height. What is the height of the trapezium is L. But wait, have patience. देखिए, यहीं पर सिली मिस्टेक हो जाती है जल्दबाजी में। बच्चे क्या करते हैं? बच्चे अपनी जल्दबाजी, सर यही आंसर है, अरे खत्म है कैरियर। Adiabatic death है बच्चों, adiabatic death. I hope you guys know what is adiabatic. Hope I'm conveying this to mechanical engineers. Okay, nice. So half into sum. बच्चे, ये तो एरिया लिखा ना तूने, ये तो एरिया है ट्रेपीजियम का, बट अपने को क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे? डेप्थ से मल्टीप्लाई। सो डेप्थ किसके बराबर है? विड्थ ऑफ द प्लेट क्या मान लीजिए? b मान लीजिए। आर वी क्लियर? यस। ये देखो, आप इसमें भी देख सकते हो, आप इसमें भी देख सकते हो। ये देखो, ये जो हाइट है ये क्या है? P1, और ये जो हाइट है ये क्या है? दिस इज P2। देन द वॉल्यूम ऑफ दिस प्रेशर प्रिज्म, concentrate, volume of the pressure prism. So the volume of this pressure prism is going to be half into sum of parallel side is P1 plus P2. So this is P1 plus P2 into length. Length is L into depth is B. Oh my God. Excellent, my dear students. Clear? Wonderful. अभी भी चीजें बची है। ये देखो, अगला क्या? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। सी, फोर्स तो निकाल लिए, लेकिन ये फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे निकाला जाता है आपको पता है? विल लाई एट द CG ऑफ द प्रिज्म, विल लाई एट द CG ऑफ द प्रिज्म।
फिलहाल हमारे प्रिज्म का कैसा शेप है? ट्रेपीजियम. सो यू नो समवेयर हियर, कंसंट्रेट will lie the center of pressure, and from this point of center of pressure, my dear students, a force is going to pass normal to the surface, and the magnitude of this force will be equal to the volume of this pressure prism, but you know the point of application of this force, which is the center of pressure of the force, will be actually the CG of the prism, and you guys know that the distance of this CP you can find from both the parallel side. अभी बताए ना, ट्रेपीजियम में दोनों पैरेलल साइड से हम लोग डिस्टेंस निकाल सकते हैं. Okay, so from both the parallel side. So if you are finding the distance from this parallel side, let this distance be some y. What is the other parallel side of the trapezium is there beta? P1. So P1 side से distance मान लिए कितना? x. Excellent my dear students. आ जाओ. हाँ, अब आप ही लोग मुझे बताओ, क्या आप मुझे x बता सकते हो? What is x? X is the, listen carefully, x is the distance of center of gravity of the prism, which is actually the CP of the force. Confuse मत हो, 3 बारी रिपीट कर चुका हूं. और कभी भी एग्जामिनेशन में कंफ्यूजन हो ना, सर का चेहरा बस याद कर लेना एक बार. अरे मैं बता रहा हूं ना, टीचर की शक्ल याद करते ही बेटा फॉर्मूले हो तुरंत दिमाग के अंदर आते हैं. क्या बोला था सर ने? CP of the force is CG of the prism. खत्म, कभी कंफ्यूजन हो ही नहीं सकता. So therefore is the CG of the prism. अब बेटा आप ये x डिस्टेंस कौन से वाले साइड से निकाल रहे हो? A से निकाल रहे हैं. तो हमारे फॉर्मूले का तरीका क्या कहता है? जब आप P1 से निकाल रहे हो तो अपोजिट वाले साइड का ट्वाइस लेंगे. तो अपना फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2P2 प्लस P1 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 into L by 3. Excellent. Similarly, can you find the value of y? Yes, we can find it. How to find the value of y, my dear? 2P1 plus P2 divided by P1 plus P2 into L by 3. I hope आप लोगों को आइडिया लग रहा है कि प्रिज्म की मदद से कैसे निकाला जा सकता है. आ जाओ एक और केस देख लेते हैं. नाउ देयर इज दिस वर्टिकल प्लेट इज देयर. अभी वो प्लेट कैसी थी? इंक्लाइन. अभी प्लेट कैसी है? वर्टिकल. प्लेट का लेंथ है L और प्लेट का डेप्थ है B है. ठीक है, WX बार से तो निकाल सकते हो तुम लोग. हम लोगों ने क्लासरूम में यार कितने न्यूमेरिकल्स करते हैं हम लोग, बट चलो प्रिज्म से निकालते हैं. प्रिज्म अभी का मेन उद्देश्य है प्रिज्म. हाँ भाई, प्रिज्म मेथड से अगर मुझे फोर्स निकालना है तो पहले तो मुझे प्रिज्म बनाना पड़ेगा और उसका शेप देखना पड़ेगा कि किस शेप का प्रिज्म बन रहा है. नाउ सी, दिस इज द फ्री सरफेस इज देयर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रेशर हियर? द प्रेशर आई एम गोइंग टू ट्रीट एज 0. अब यहां पर बच्चे को डाउट आता है. बच्चा बोलता है सर यहां पर प्रेशर 0 थोड़ी ना है, यहां पर तो प्रेशर क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर है. तो सर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को 0 क्यों ले रहे हो? देख बेटा, यहां पर अच्छा सवाल है, समझ मेरी बात को. मान लीजिए अगर यहां पर आप 0 की बजाय, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल अभी के लिए, मान लीजिए आप 0 की जगह PATM लेकर चलते हो. ठीक है, तो बच्चे यहां पर लगने वाला प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा, विच इज गोइंग टू बी PATM प्लस P1 लेटस से. यहां पर लगने वाला प्रेशर थोड़ा सा ज्यादा होगा, विच इज गोइंग टू बी PATM प्लस P2 लेटस से. यहां पर लगने वाला प्रेशर और ज्यादा होगा, विच इज गोइंग टू बी P. बेटा ये बात ध्यान से सुन लेना तुम लोग, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. ये देखिए, यहां पर लगने वाला फोर्स इज गोइंग टू बी PATM प्लस P3 होगा. So how many students are understanding that everywhere on this side of the plate one pressure is same, that is PATM. Just look at this now. And only the other pressure which is varying with depth is changing from P1, P2 to P3 and P4. So plate के इस तरफ
P1 P2 P3 तो वेरी कर रहा है, सिर्फ वही चीज वेरी कर रहा है, बाकी पूरे में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। और कितने बच्चे ये बात समझ पा रहे हैं कि प्लेट के इस तरफ तो कोई लिक्विड नहीं है, जब इस तरफ कोई लिक्विड नहीं है तो यहां पर क्या, एयर। तो पूरे के पूरे प्लेट पे इस तरफ से समझो बच्चों क्या ही लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही लग रहा है। देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड कि प्लेट के इस तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्लेट के इस तरफ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये कैंसल आउट हो जाएंगे और जो नेट बचेगा वो सिर्फ वेरिएशन ऑफ प्रेशर ड्यू टू हाइट के कारण होगा। आया मजा? यही रीजन होता है कि न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करते वक्त हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट कर देते हैं। ये देखो ना, आप कोई सा भी केस ले लो, यू जस्ट लुक एट एनी केस फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने ये किए थे बच्चे, किए थे कि नहीं? तो यहां पर भी देखो हमने P1 यहां का प्रेशर एक्चुअली PATM प्लस ρGH होना चाहिए था। बेटे टीचर की फ्रीक्वेंसी से मैच करके चलोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। सो यहां P1 का प्रेशर होना चाहिए था PATM प्लस ρGH, मान रहे कि नहीं? लेकिन हम लोगों ने सिर्फ क्या लिया, ρgx1 लिया। क्यों? क्योंकि यहां पर ये जो भी एरो बने हैं प्रेशर के, इन सब में PATM तो कांस्टेंट ही है, ठीक है, और प्लेट के इस तरफ भी PATM है। So the force due to that and this is cancelling out. Only the resultant force which is due to the variation of pressure over the surface due to height is remaining. This is the reason why PATM को लेने की जरूरत नहीं है। This is the reason why PATM को लेने की जरूरत नहीं है। I hope आपको चीजें क्लियर होती जा रही हैं। Don't worry, फिर से बना देंगे, Don't worry, फिर से बना देंगे, doesn't matter to us. Okay, चलो मैं एक रफ डायग्राम आपके लिए बना रहा हूं so that अब हम ये वर्टिकल प्लेट को देख लें। So let us see that there is this vertical plate AB is there, okay, and if this is the vertical plate AB is there, then my dear students, if this is the free surface is there, now you guys please tell me what is going to be the pressure at this point. We will take pressure at this point to be as 0. Though the pressure is atmospheric, but atmospheric we are neglecting because that will have no effect on the net resultant force acting over the plate. So therefore here the pressure is 0. Then here there is going to be some pressure. Join this linearly. Oh my God. Can you guys see that what kind of a prismatic shape is made here? A triangular pressure prism is made here. Wonderful. And if this is a triangular pressure prism is there, this is the side that is equal to P. Let the length of the plate is some L. Can you find the pressure here? Yes. Pressure at B point? Yes. Pressure will be rho G into height. Vertical height is rho G L. Then my dear students, every student must know that the force must be equal to the volume of the pressure prism. So the volume of the pressure prism is going to be half. See, area of the triangle multiplied by depth. Area of the triangle multiplied by depth. So half into base is rho GL, or simply you can write P1. Doesn't matter to me. So half into base is P, into height is L, but this is area multiplied by depth, or the width of the plate is the force, And now just see the beauty. So therefore, let me represent this force. Don't worry. Let me represent this force, my dear students. So this is going to be the force. And it is going to lie somewhere here. And this is going to be the point of application of force, which is the center of pressure. Now we know again, last time दोहरा रहा हूं बच्चे, इसके बाद नहीं होगा. The CP of the force is CG of the prism. And the prism is a triangular shape. For triangle, we all know the center of gravity lies at a distance of h by 3 from the base. So from the base, this is the base, no re baba. So from the base, my dear students, this is going to be
at a distance of L by 3 from the base and 2L by 3 from the apex. 2L by 3 from the apex. So I think I have made all the points crystal clear that are required to solve this problem. But one thing I haven't told you guys. You see, in all the examples which I have shown you till now, there was single fluid was there. But here, how many fluids are going to be there? Multiple fluids are going to be there. तो बेटा यहाँ पर अगर मुझे प्रिज्म टेक्निक से टोटल फोर्स निकालना है, तो बेटा इस प्लेट के ऊपर कितने प्रिज्म बनेंगे? 2 प्रिज्म बनेंगे. There are going to be 2 prism. Excellent students of India. चलो, let us solve. Be highly energetic in my classes यार. देखिए, एनर्जी एंथुजियाज्म के बिना यार एग्जाम क्रैक करना, आई एम वेरी सॉरी. डेड बॉडीज भी क्या खाक पड़ती हैं क्या? आप सोचिए ना, मृत लोगों को पढ़ा के क्या फायदा? पढ़ाने का फायदा जोशीले लोगों को है यार. एनर्जी एंथुजियाज्म रखो अपने अंदर, बात बनेगी. चलिए आइए प्रिज्म बनाते हैं. माय डियर स्टूडेंट्स, सी दिस इज द फ्री सरफेस इज देयर and concentrate on board up to this height. It is submerged in water. Up to this height. And rest of the height of the plate is submerged in mercury. Now let me make the prism over this. Are you ready? Yes, बच्चा लोग. चलो ये देखो prism बनाना शुरू करते हैं. For making the prism, let me use this color, don't worry. Okay, nice. See, at point A, you guys please tell me, will there be any pressure or no pressure? There will be pressure. Because this point A is at a depth of 1.75 meter from the free surface. देखो ना, total depth है, C point की depth है 2 meter and A point is 0.25 meter above it. तो प्यारे बच्चों, आप मुझे ये बताओ, ये वाला हाइट कितना हो गया? आप मुझे ये बताओ, ये वाला हाइट कितना हो गया? फ्री सरफेस से यहां तक का हाइट विल बी 1.75 मीटर फ्रॉम द फ्री सरफेस. सो देयरफॉर, इज देयर एनी प्रेशर एट ए पॉइंट? द आंसर इज यस. So if there is any pressure at A point, let me make an arrow to represent that pressure. Wonderful. Is there any pressure at C point? Yes, but the pressure at C point is more than A. तो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने थोड़ा लंबा एरो बनाए. And let me join this with a straight line. Represents linear variation of pressure over the surface with vertical depth. Now, next question. My dear students, kindly please tell me, is there any pressure at B point? The answer is yes. And the pressure at B point is more than C. So this is the arrow which is representing here. And this is the prismatic shape. Which is going to be there. Let us assume that the pressure acting here is P1. Let us say that the pressure here is P2. And let us say that the pressure here is P3. Hope आपको समझ में आ रहा है. अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया, तो बच्चा लोग ये देखो. It is going to be somewhere here. Oh yes. Oh, wonderful. Excellent. Now can you feel the diagram? Just feel the pressure prism. So ये एक pressure prism है, and on the later half of the plate there is pressure prism. So ये जो नीले कलर वाला pressure prism है, this is due to water. And ये जो हरे कलर वाला pressure prism है, this is due to mercury. Because up to this depth, listen na, up to this depth, it is submerged in water. And up to this depth, it is submerged in mercury. Hope the things are crystal clear. So my dear students, let me show it with highlighter. Much better. See, this. I'm taking this as P1. Wonderful. Concentrate.
My dear students, have patience, bacha. Have patience. See this. I'm taking as what? P2. And my dear students, I'm taking this. Okay? I'm taking this as P3. I rest my case. So over this plate, 2 prisms are going to be there. है ना? So this is the 2D view. And this, my dear students, is the 3D view spread over the surface of the plate. Are we clear? Yes, wonderful. Chalo, let us solve now. We are ready to go. Okay, nice. So what is the first thing that I require to solve my problem? I want the value of P1. So P1, it is in water. So water, it is going to be rho GH. So it is rho into G is 9810 multiplied by, okay, rho into G is 9810. Okay, so rho into G is 9810 multiplied by height. How much is this height? My dear? Already I have told you guys this height is 1.75. So therefore it is 1.75. I'm having the calculations already. This is going to come out to be 17167.5 Newton is okay. Is going to be P1. Can you find the value of P2? Yes, definitely we can find the value of P2. P2, concentrate. देखिए, P2 means इस पॉइंट का प्रेशर. P2 means इस पॉइंट का प्रेशर. अब कितने बच्चे ये समझ पा रहे हैं कि भाई इस पॉइंट का प्रेशर विल बी प्रेशर ड्यू टू दिस कंप्लीट एंड दिस पॉइंट का प्रेशर विल बी P1 प्रेशर प्लस rho GH. आप समझो ना बच्चे, ये देखो, ये जो अब मैं थोड़ा ये गंदा होने वाला है डायग्राम, अब समझाने के लिए गंदगी मचानी पड़ेगी. आप देखिए ये यहां का प्रेशर, सो यहां का प्रेशर ये भी विल बी ऊपर का पूरा प्रेशर. ठीक है, अभी ऊपर का पूरा प्रेशर इज गोइंग टू बी दिस प्रेशर प्लस rho GH, क्योंकि यहां तक का प्रेशर तो हमने कैलकुलेट कर लिया ना रे बाबा. ये देखो ना, ये टोटल प्रेशर चाहिए तो यहां तक का तो प्रेशर हमने कैलकुलेट कर लिया एंड दैट प्रेशर इज व्हाट? P1. Rest is rho GH. Wonderful. And what is this? And again, this is due to water only. And how much is this height? 0.25. So let us do here. So P2 is going to be P1 plus rho GH due to water again. So this is going to be 9810 multiplied by height. How much is the height? Is 0.25. Excellent, my dear students. When you are going to calculate this, you are going to get the answer as 19620. 19620. Excellent. Let us now try to find the pressure P3. क्लासरूम में आपको मल्टी लेयर्ड फ्लूइड पढ़ाया जाता है ना. मल्टी लेयर्ड फ्लूइड के बॉटम का प्रेशर विल बी rho GH1 of प्लस, rho GH1 of H2 of सेकेंड, rho GH3 of थर्ड. ऐसे ही तो करते हैं. अभी यार देखो, ये CTQ इज एन एडवांस लेवल कोर्स रे बाबा, एंड आपको पूरा ब्रीफली पहले ही बता दिया गया है कि आप पहले से बेसिक सब पढ़ के आए, क्योंकि यहां तो न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे जहां पर बच्चे मिस्टेक करते हैं. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो नाइस, वंडरफुल. सो P3 प्रेशर, अभी इधर देखो, P3 प्रेशर इज गोइंग टू बी यहां का प्रेशर. Now P3 pressure is going to be P2 pressure plus rho GH of mercury. इधर देखो रे बाबा, ये देखो, P3 pressure is this much, so P3 pressure is going to be this pressure plus rho GH, this pressure plus rho GH of mercury. आ जाओ. So therefore P3 pressure is going to be P2 plus mercury pressure is going to be 13600 into 9.81 into what is the height of mercury? Height of mercury is 0.75. It is 0.75. Excellent students, 0.75. And if it is 0.75, when you're going to calculate, it is going to come out to be 119682. 119682.
Now are we ready to find the force? Yes. Now just concentrate here. How to find the total force? देखिए, आप क्या करिए, ये ब्लू कलर वाले प्रिज्म की रिजल्टेंट फोर्स निकालिए, हरे कलर वाले प्रिज्म की रिजल्टेंट फोर्स निकालिए. Then the total force acting over the plate is going to be resultant of this plus this. Clear? तो मैं उसको यहीं पर नाम दे दे रहा हूं, थोड़ा सा दिखाएंगे, मोटे मार्कर से दिखा रहे हैं. See, for example, if this force is some F1 and this is the resultant force of this green color prism, that is F2. That is F2. Now, अभी देखो, इसको दो भाग में बांट लिया, नीले का फोर्स एंड हरे का फोर्स. निकाल सकते हैं क्या? चलो शुरू करते हैं. पहले F1 निकालते हैं. Let us go for the value of F1. My dear students, F1 is going to be the volume of, देखो मैं नाम के साथ लिख रहा हूं ताकि याद रहे तुम लोगों को, ब्लू प्रेशर प्रिज्म. वॉल्यूम ऑफ द ब्लू प्रेशर प्रिज्म. अभी ब्लू कलर वाले प्रेशर प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे लिखेंगे? इट इज गोइंग टू बी हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड. सो सम ऑफ पैरेलल साइड इज P1 प्लस P2. डोंट वरी, अभी दिखाते हैं. ये देखो, जो नीले कलर वाला प्रेशर प्रिज्म है उसका एक साइड P1 है, दूसरा साइड P2 है. उसका हाइट कितना है? 0.5 और उसका डेप्थ इनटू द बोर्ड कितना है? 3 गिवन इन द क्वेश्चन. ओके, नाउ थिंग्स आर क्लियर. P1 plus P2 into height is 0.5 into depth is 3. Now everything you guys know. Can you find the value of F1 from here? Yes. F1 value is going to come out to be, when you are going to calculate, is 27.590 kilonewton. Kilonewton. Wonderful. Let us find out the value of F2. So F2, my dear students, is going to be the volume of the green pressure prism. Is going to be the volume of the green pressure prism. Okay. चला रे बाबा, this is going to be half. देखो ना जी, आप देखो ना जी, ग्रीन वाला प्रेशर प्रिज्म. ग्रीन वाले प्रेशर प्रिज्म का एक साइड ये है विच इज P2 और दूसरा साइड क्या है? P3. तो और इसका हाइट कितना है? 1.5 और डेप्थ इनटू द बोर्ड है 3. मैं बच्चों को यही बोलता हूं, जितना ज्यादा आप सब्जेक्ट को महसूस करोगे, विजुअलाइज करोगे, फ्लूइड मैकेनिक्स है ही ऐसा सब्जेक्ट, इट कैनॉट बी सॉल्व्ड विदाउट विजुअलाइजेशन. विदाउट विजुअलाइजेशन द सब्जेक्ट इज अ फेलियर. आई एम टेलिंग यू. सब्जेक्ट क्यों फेल होगा भाई? स्टूडेंट इज अ फेलियर बिकॉज विजुअलाइजेशन. आपके दिमाग में वो 3D इमेजिनेशन बन के आना चाहिए कि अच्छा सर इस बारे में बात कर रहे हैं, अच्छा ये वाली हाइट यहां से ये वहां पर, समझ रहे हो आप बात को? तो वो चीज जरूरी है बच्चा लोग. सो चलो, सो दिस इज 1.5 एंड डेप्थ इज 3. आ जाओ वैल्यू देखते हैं. सो हाफ इंटू P2 प्लस P3. वंडरफुल. इंटू height is 1.5 into depth into the board is 3. When you are going to calculate from here, the F2 value will come out to be 313.4295 kilonewton is the value of F2. Now everybody should know, flat surfaces के केस में स्केलर एडिशन होता है. नहीं समझते हैं ये लोग. आपको क्लास के अंदर डेरिवेशन करवाई गई है ब्यूटीफुली. यू सी, फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द फ्लैट सर्फेस इज देयर, देन आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया बिकॉज ऑल दीज थिंग्स आर टॉट इन क्लासरूम. ओवर द सर्फेस ऑफ द प्लेट, स्मॉल फोर्स F1, dF2, स्मॉल एरिया, स्मॉल फोर्स dF3, स्मॉल एरिया, स्मॉल फोर्स dF4, something like this. So my dear students, you guys know that the total force acting over the plate is going to be scalar addition of the small forces. Because the direction is already fixed. Direction will always be normal to the surface. है ना? और इसी को हम derive करके निकालते हैं that this total force is either equal to the volume of the pressure prism or either it is equal to WA x bar, or the pressure acting at the centroid multiplied by area. Pressure acting at the centroid multiplied by the area.
Wonderful. So therefore total force acting over the plate is going to be F1 plus F2. Is going to be F1 plus F2. And that is going to come out to be, my dear students, 341.01 kilo Newton. चलो भाई, एक बोझ तो सर से उतरा, फोर्स निकल गया अपना प्लेट के ऊपर. क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है. सी द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन. क्वेश्चन तो बेटा ऊपर से नीचे तक पूरा नाप देगा आप लोगों को. ये देख, आजा. What is the next thing you need to find out is the point of application of force. Now, how to find out the point of application of the force? That is an important task. For that, let me tell you somewhere here. Concentrate. Here we are going to use principle of moments of our mechanics. For example, if this is the plate AB is there, then just now what you do is you have founded out this force which is F1. Find the if you are taking A as the reference, okay, then you know F1 force, find the distance x, okay, then this is some force F2 is there, find the distance lying at a distance of y from A. Then everybody knows here that this is some resultant force F is there, and resultant force is going to lie at a distance of z from the A point, Then how to find out? What is my aim? My aim is to find out this, the distance of the resultant force or the location of the resultant force from A. Yes or no? Then how to do this? Small force moment about A is total force moment about A. As simple as that, my dear students. So this can be written as F1 cross X plus F2 cross Y. Excellent. Is equal to F cross Z. Is equal to F cross Z. अभी तुम लोग देखो, क्या हमें F1 पता है? Yes. क्या हमें F2 पता है? Yes. क्या हमें F पता है? क्या हमें F पता है? Yes. Wonderful. अभी हम क्या निकाल सकते हैं? X निकालेंगे और Y निकालेंगे. अगर हमें ये पता लग गया, क्या हमें Z पता लग जाएगा? Which is the point of application of the resultant hydrostatic force? But उसके लिए अपने को क्या चाहिए? F1 फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और F2 फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन. आ जाओ रे बच्चा लोग, आ जाओ रे बच्चा लोग. ये देखो, पहले तो हम ये करते हैं, इसको हटा देते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो. इसका काम खत्म है यहां से. नाउ सी, हियर यू हैव अप्लाइड F1 फोर्स. बेटा अभी ध्यान दो ना, ये सब जरूरी चीजें हैं. दिस इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 फोर्स. द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F1 फोर्स will be the CG of the blue color prism. ये देखो, फिर बोल रहा हूं. टेंशन नको भाई. When sir is there, टेंशन नको, बिल्कुल नहीं टेंशन होना चाहिए. Concentrate. क्या बोल रहे हैं सर? ये जो F1 फोर्स है, इसका the F1 फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन will be the CG of this blue color prism. Will be the CG of this blue color prism. Yes sir. और क्या आप ब्लू कलर के प्रिज्म का CG निकाल सकते हो? Yes. अभी ब्लू कलर के प्रिज्म का CG या दोनों पैरेलल साइड से निकल सकता है, या तो P1 से निकालो या तो P2 से निकालो. हमें वैसे भी ये डिस्टेंस चाहिए जिसे हम क्या मान रहे हैं? X मान रहे हैं. क्या मान रहे हैं? X मान रहे हैं. क्या आप x निकाल सकते हो बच्चा लोग मेरे लिए? बोलो हाँ सर, बोलो हाँ सर, हाँ सर. आ जाओ सर. ये देखो सर. सो देयरफॉर क्या, ओह यस, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. ये देखो क्या निकालना है बच्चे? x. और x इज द डिस्टेंस ऑफ CG फ्रॉम P1. तो रूल क्या कहता है? अपोजिट वाले साइड का ट्वाइस लेंगे. खत्म. ये देखो, सो 2P2 प्लस P1 divided by P1 plus P2 into what is the height? What is the height here? 0.5. 0.5. So it is 0.5 by 3. 0.5 by 3. अभी बड़े सारे बच्चे मेरे को ये भी बोलते हैं, सर आप अभी जो डील कर रहे हो सर, प्लेन सरफेसेस पे मल्टीपल फ्लूइड्स डील कर रहे हो. सर
कर्व सरफेस पे मल्टीपल फ्लूइड्स, अगले लेक्चर में वही पढ़ाऊंगा। देखो मेरा काम ही यही है यार, अभी इस लेक्चर में प्लेन सरफेस पे मल्टीपल फ्लूइड पढ़ाए, अगले लेक्चर में कर्व सरफेस विद मल्टीपल फ्लूइड पढ़ाएंगे। तो अगले लेक्चर की भी जिज्ञासा अभी से बननी चाहिए कि यार कुछ नया सीखने को मिलेगा। ओके, 0.5/3. Excellent, my dear students of India. So if you calculate this value, I'm already having the calculations, is going to come out to be 0.2555 itself. Wonderful, nice. Next. Just concentrate. See, next you need to find out the point of application of F2 force. Point of application of F2 force. Then point of application of F2 force का distance आपको कहां से निकालना है? A से। जिस distance को हम लोग क्या बोल रहे हैं? Y बोल रहे हैं। अभी आप देखो, this Y distance is 0.5. Concentrate. This Y distance is 0.5 plus distance of CG of the green color prism from P2. I rest my case. I literally rest my case. You got... बच्चा देखो, आखिरी बार बताया जा रहा है, बस इसके बाद मैं नहीं करूंगा यार। ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस y is going to be 0.5 plus 0.5 plus distance of CG of the green color prism from where? P2. From where? P2. चलो कर लेते हैं भाई। So this is going to be y. So y, my dear students, is going to be 0.5 plus what is going to be the distance of CG from our P2 force? So that is going to be 2P3 plus P2 divided by P3 plus P2 into, don't worry, what is the height of this? Re Baba, this is 1.5. So this is 1.5/3. When you are going to calculate this, you are going to get the answer as 1.4295. 1.4295. Are all the things sorted out now? Yes, all the things are sorted. And when all the things are sorted, then just apply everything into this. So I am applying, what is the value of F1? F1 value we have got as 27.590 into x. How much is this distance x? Distance x is 0.2555. Very good. Plus F2. F2 value we have found it out to be 313.4295. Wonderful. Cross y, and y value we have found it out to be 1.4295. Excellent. Is equal to F cross Z. So therefore F value we have found it out to be as 341.01 cross Z. So only one unknown from here. Let us find the value of Z. And once you find out the value of Z, my dear students, it is going to come out to be 1.3356 meter from A. Z is going to be 1.3356 meter from A. Okay, let us represent the final resultant force. See, okay, let me just short it out. Don't worry. Nice. My dear students, the resultant force is going to be lying somewhere here. That's the net resultant force F, and it is going to lie somewhere here at a distance of Z from A. At a distance of Z from A. I hope you guys enjoyed this question like anything. और यही मकसद है। आप देखिए, पूरा कोर्स आज हमारा 8th या 9th लेक्चर है CTQ का, एंड आप देखो कितना ब्यूटिफुली आपको एक एक चीज बताते चल रहे हैं, और क्वेश्चंस का लेवल देखिए। होप यू गाइज एंजॉयड दिस क्वेश्चन। वंडरफुल।